Good afternoon and welcome to the session on the topic Screening in Newborns Parental Awareness by Dr. Ramani Ranjan, Senior Consultant, Apollo Cradles and Children Hospital, Greater Noida. Welcome, sir. Thank And you. I would like an audience to know that this session is very important for all the parents. After very long, we have got this topic about newborns. We have received a lot of comments for this topic. So please pay attention. Stay tuned to the last. If you have any questions, any queries, so post it in the comment chat box. Doctor will answer that. And over to you, sir. Thank you. Good evening, Namaskar. I'm Dr. Ramani Ranjan. I'm Senior Consultant Neonatologist and Pediatrician at Apollo Cradle and Children's Hospital in Greater Noida. So I welcome you all for today's session. And this is a very important topic that we deal on day-to-day basis. And there is a lot of parental questions, anxiety, need about what we call newborn screening. So let me first tell you what is actually screening. So screening means testing apparently healthy population for certain diseases which is curable or we have got a treatment for. For example, in grown-ups we have breast cancer screening, we have colon cancer screening. There are various modalities of screening even healthy people. And the idea is to catch hold of those who are having early disease so that the treatment can be instituted in right time and the outcomes are good. ऐसे ही newborns में there are certain diseases conditions which we do not want to miss, so that is why newborn screening is offered to parents and the basic need is to catch hold of any baby who is having a disease which is amenable to treatment, or at least we can do something about it, and that is the very purpose of screening. So I'll just talk through what are the important screening tests that we do at the time of birth in the neonatal period, like from birth till 28 days of life, and then we will discuss each of them one by one. So the first test that we talk about is thyroid screening. So it's very common to have thyroid issues in adulthood. Many mothers antenatally have got thyroid problems who are hypothyroid, very rarely hyperthyroid. So हर बच्चे का हम जन्म के बाद थायराइड टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बच्चे के थायराइड लेवल्स कितने हैं. So it's a very rare occurrence that a baby is hypothyroid. That means TSH उनका बढ़ा हुआ आता है, and if it is really high on repeat testing, sometimes we start babies on what we call thyroid supplements. So this is very, very important. Why it is important? Because thyroid hormone is a very important hormone for overall growth of the baby, especially the mental aspect. So if the baby is hypothyroid, यानी कि शरीर में उनके थायराइड हार्मोन की मात्रा कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, शरीर में थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा, और हमें ये पता नहीं है कि बच्चे के अंदर ये कंडीशन है, बिकॉज जब हमें ये पता चलेगा क्लिनिकल साइंस एंड कंडीशन से तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम बीत चुका होता है. तो इस दौरान क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट में सफर. दैट मीन्स जो नॉर्मल थायराइड की प्रेजेंस में जो विकास होना चाहिए वो ना होके थायराइड के एब्सेंस में कुछ एक प्रॉब्लम, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं. So that is why it is very, very important to pick up such babies very early on, so that if needed, if at all necessary, based on certain tests, we can start thyroid supplements very early on, as early as 10-14 days of age life में हम start कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से. So this is the importance of thyroid screening. So thyroid screening के साथ there is something called newborn screening also. Newborn screening में there are certain diseases that we want to screen. These are very rare diseases like G6PD deficiency है, phenylketonuria है, cystic fibrosis है, biotinidase deficiency है, galactosemia है. So these are very uncommon diseases. Like इनका जो incidence है, it is really less. But these are bad diseases. Like if any baby is having such condition, and if the baby is not picked up by this test, then it can damage the organs. बहुत बारी जब हमें टेस्ट करके ये पता चलेगा लेटर ऑन, तब तक काफ़ी सारा नुकसान शरीर पर हो चुका रहता है. तो इसीलिए अगेन हमें if the baby is having this condition, it's very important to catch hold of such baby early on so that the right treatment can be started. G6PD deficiency, for example, is common in certain parts of India, and सिमिलरली कुछ एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स हैं जहाँ पर की अलग कंडीशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट इज़ फॉलोड वर्ल्ड वाइड.
डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, थायराइड स्क्रीनिंग इज लाइक नॉर्म। इसके लिए कोई पूछता नहीं है पेरेंट्स से कि whether we have to go for it or not. It's a routine test like any other test, routine test for a newborn baby. India maybe there is a lot of awareness now. Many centers, in fact, most of the centers now they are doing thyroid screening and also offering newborn screening. So this is very important, as I say to parents. There is cost implication because it comes with a price, but if we can afford, then definitely newborn screening is something we should get it done. And thyroid screening is mandatory, that we definitely have to do it without any doubt. नेक्स्ट कम्स ओई, ऑटो एकाउस्टिक एमिशन टेस्ट कहते हैं इसको, जिससे कि हम बच्चे की सुनने की क्षमता का जांच करते हैं ना. देयर इज अ स्मॉल मशीन which is put in the ears, baby's ears में डाल के, and then we check whether the baby's hearing organs are working properly or not. So usually it is done after 48 hours of age. बच्चे के जन्म के 48 घंटे के बाद ये कर सकते हैं, और जितना जल्दी हम कर लें उतना अच्छा है. अगेन इट्स अ वेरी रेयर ऑक्यूरेंस कि बच्चे को सुनने की दिक्कत है या डेफ है बच्चा कॉन्जेनिटल. इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, but there we often come across babies who have such conditions. So it's important to get it done again, so that we do not miss on babies who have got difficulty in hearing. अगर ऐसा है तो early on treatment institute करके we can make sure baby hears, because unless the child is able to hear clearly, जब तक कि वो सुन नहीं पाएंगे तब तक वो बोल नहीं पाएंगे, and the development again can suffer if the child is not able to hear properly. So सुनना बहुत ही important stimuli है ब्रेन के ओवरऑल विकास के लिए. देखना, जैसे हम कहते हैं आँख वैसे ही कान, is extremely important. So ये भी टेस्ट है. दिस इज अगेन एज आई सेड इज डन आफ्टर बर्थ. न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में बताना भूल गया. सो आइडियल टाइम टू गेट इट डन इज आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एज, यानी 48-72 घंटे के बाद हम ये टेस्ट कर सकते हैं, और विद इन अ मंथ किया जा सकता है. एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ कर लेना इज द राइट थिंग, सो दैट द चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, जब तक हम कर लेंगे तो हमें फिर अलग से इसके लिए करने की जरूरत नहीं होगी. सो द बेस्ट टाइम टू गेट इट डन इज बिफोर डिस्चार्ज. अगर सी सेक्शन है तब तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं. अगर नॉर्मल डिलीवरी है समटाइम, बिकॉज यू माइट बी डिस्चार्ज अर्ली बिफोर 48 आवर्स, इन दैट केस वी गेट इट डन ऑन ओपीडी बेसिस. Third is ROP screening. ROP basically retinopathy of prematurity. So this is a test of eyes that is offered to babies who are less than 34 weeks of age, जिनका कि जन्म 34 सप्ताह के पहले हुआ हो, या फिर जिनका वजन 2 किलो से कम हो. ऐसे बच्चों के लिए आंखों की जांच करनी जरूरी होती है. इट्स अ वेरी रेयर थिंग. कभी कभी अगर बच्चा बहुत प्रीमैच्योर हो तो आंखों का जो विकास है, रेटिना का जो विकास है, वो नॉर्मल तरीके से ना होकर डिफरेंट वे में होता है, और इससे आगे चलकर विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं किया जाए तो. इसलिए व्हाट वी डू नॉर्मली, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्राइटेरिया को, वी आस्क आवर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कलीग्स, वो आते हैं, बच्चों की आंखें जांच करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट दे आस्क देम टू गेट इट डन एवरी बाई वीकली और that is up to them findings के हिसाब से. वो ये भी कह सकते हैं कि हमें और दोबारा करने की जरूरत नहीं है, या they may also ask that we need to get it done after 2 weeks or 4 weeks, depending upon the condition of the eye. So this is not a routine test for all babies. As I said, it is mostly for premature babies, या फिर डॉक्टर को लगता है कि बच्चे का जो क्लिनिकल कोर्स है वो थोड़ा ट्रबलसम रहा है, बच्चे को इन्फेक्शन रहा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी. समटाइम्स इवन ओल्डर बेबीज कैन ऑल्सो be needed to go through this test. So it's basically dependent on clinical condition and the treating doctor's discretion if the child needs screening for retinopathy. And then we also screen for what we call DDH, developmental dysplasia of hip. So basically it's a rare condition again that the long bone, ये जो हमारा जो femur है, the way it joins the hip bone, वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अगर वो ठीक तरीके से जुड़ा नहीं हो, देयर इज अ अनस्टेबल हिप, यानी कि जो लॉन्ग बोन है दैट कैन मूव इनसाइड द बॉडी जॉइंट इन अ डिफरेंट मैनर. कभी कभी इसकी वजह से आगे चल के बच्चे का जो विकास है इन मोटर डेवलपमेंट, लाइक चलना, वॉकिंग करना, ये भी डिलेड हो सकता है, लॉन्ग बोन्स पे अफेक्टेड हो सकते हैं अगर ये समय पर इसकी जांच नहीं की गई या फिर पता नहीं चला. और अर्लियर जितना जल्दी हम इस चीज कंडीशन को पकड़ लेते हैं उतना ही इसका इलाज आसान है. अगर ये अनट्रीटेड रह गया, सपोज कर लो आप फॉर एन ईयर और सो, देन इट माइट नीड सर्जिकल इंटरवेंशन. सो इफ वी कैन गेट होल्ड ऑफ दिस कंडीशन अर्ली ऑन, देन कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि बिना
सर्जरी के बिना काट छांट के भी इसका इलाज संभव है। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप। स्पेशली जो बच्चे ब्रीच प्रेजेंटेशन में जन्म लेते हैं, यानी कि पहले जिनका पैर डिलीवर होता है सर के बजाय, ऐसे बच्चों में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट बॉर्न गर्ल चाइल्ड में ज़्यादा फर्स्ट बॉर्न आई थिंक गर्ल चाइल्ड में ज़्यादा कॉमन है। यस, तो so these are the conditions which we need to be aware of. And other screening that we do is for eyes, इसको ब्रेड रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें कि ऑप्थेल्मोस्कोप आता है, जिससे कि हम आंखों में लाइट डाल के ये देखते हैं कि जो रेड रिफ्लेक्स यानी जो हमारा नॉर्मल रिफ्लेक्शन आता है वेसल्स का, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमें डाउट है रेड रिफ्लेक्स नहीं है, समटाइम वी आस्क आवर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट फ्रेंड्स टू हैव अ लुक, यू नो। So this is something that we do as a screening procedure for all children. This is not for premature. This is for all babies that are born in the hospital. So this is a way to make sure that hearing, vision, you know, newborn conditions, जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें rule out हो जाती हैं। And also very often we also do what we call jaundice screening. So बच्चे जब you know, neonatal jaundice is a very common condition. ऑलमोस्ट 60 से 80% बच्चों में जन्म के बाद ये कंडीशन होती है, थोड़ी बहुत जॉन्डिस होती है। जब वो एक लेवल के ऊपर चली जाती है, देन ओनली वी नीड टू ट्रीट इट। हाउ डू वी टेस्ट इट? बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड टीसीबी, ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर होती है, जिससे कि डॉक्टर या नर्सेज आकर जस्ट स्किन पर उसको लगाकर जॉन्डिस का एक लेवल हमें पता चल जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वी टेक अ कॉल वेदर हमें फर्दर टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है। तो दिस इज समथिंग अगेन वी डू फॉर ऑल न्यूबॉर्न बेबीज। So these are certain tests that is usually done at the time of birth within the neonatal period. So this is newborn screening and thyroid screening, OEA यानी otoacoustic emission और hearing test, ROP यानी retinopathy or prematurity screening, DDH यानी developmental dysplasia of hip screening, and then red reflex and serum bilirubin tests. तो ये सारे टेस्ट हम जनरली करते हैं जन्म के समय विदिन अ न्यूबॉर्न पीरियड, यानी कि जन्म से लेके 28 दिनों के अंदर में अगर ये टेस्ट कर लिया जाए, दैट इज द बेस्ट टाइम, एज अर्ली एज पॉसिबल, यू नो। आइडियली बिफोर डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो बहुत ही बेहतर है, ताकि हमें समय रहते सारी चीज़ों का वी नो अबाउट द कंडीशन अर्ली ऑन, एंड दैट इज द रीजनेबल थिंग, बिकॉज समटाइम्स इन फॉलो अप वी मे नॉट बी एबल टू डू थिंग्स। फॉलो अप में पेरेंट्स या बच्चे ऐसी जगह चले गए जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है, सो समटाइम ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गेट इट डन व्हाइल द चाइल्ड इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। Right. So this is from my side regarding the neonatal screening. If there is any question, then definitely we'll go ahead. I think I might have said DDH is more common in female girls. No, it's I think it's more common in firstborn male infants. So correction from my side. Apologies for this. So it's more common in DDH in males. Right. Thank you for this kind and patient hearing. If there is any question, you can just visit Apollo Hospital Greater Noida personally, or you can ping me. Thank you very much for your kind and patient hearing. Thank you.